Paper 5, Planning, June 2018, Variant 52. When concentrated iron 3 chloride is added to water at just below boiling point, a reaction occurs and produces Fe2O3, seen as a red color in the water. This is a SOL, Sol of Fe2O3. A sol contains particles that are insoluble but do not form a precipitate. A student prepared a concentrated solution of iron 3 chloride by dissolving iron 3 chloride dot 6 water in distilled water. Hazard information for hydrated iron 3 chloride is given. For this hazard, state a precaution other than eye protection and a lab coat that a student could take when preparing a solution of concentrated iron 3 chloride. Hazard is solid iron 3 chloride dot 6 H2O is irritating to the skin. So the precaution that you will take is wearing gloves to avoid contact with the skin. Particles of a sol can be positively or negatively charged. The student used the experimental setup shown to confirm that the Fe2O3 sol particle is positively charged. तो इस डायग्राम में एक डीसी पावर सप्लाई कनेक्टेड टू टू ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन अ ग्लास यूट्यूब यूट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है और डिस्टिल्ड वाटर के बॉटम पे रेड Fe2O3 सॉल्ट मौजूद है स्टेटमेंट लिखिए द स्टूडेंट प्लेस्ड अ few cm cube of the salt at the bottom of the U-tube and poured 10 cm cube of distilled water into each side of the U-tube without disturbing the salt. The two layers of distilled water were colorless at the beginning of the experiment. Graphite electrodes were inserted and a current was passed. After 30 minutes, a difference was noted between the distilled water in the two sides of the U-tube. Predict the color of the distilled water in both sides of the U-tube after 30 minutes if the Fe2O3 salt particle is positively charged. Observation the side with the positive electrode and the negative electrode. अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि सॉल इज पॉजिटिवली चार्ज तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से वो रिपेल होगा अट्रैक्ट नहीं होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाली साइड पे जो है वो स्प्रेड आउट नहीं होगा इन द वाटर तो वाटर का कलर जो है वो कलरलेस रहेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं दे विल बी स्प्रेड आउट थ्रू आउट द वाटर तो कलर ऑफ द water in the negative side of the U-tube, negative electrode side of the U-tube would become red. So observation in the side with the positive electrode remains colorless and observation in the side with the negative electrode becomes red क्योंकि सॉल्ट फैल जाता है पूरे डिस्टिल्ड वाटर में Salt solutions can be added to salt to cause them to precipitate. This method is used in water purification. The student made up 100 cm cube of standard solutions containing 0.1 mole per dm cube of the following ions: potassium, magnesium, aluminum, chloride, sulfate, phosphate. What mass of solid potassium sulfate did the student use to make up exactly 100 cm cube of 0.1 mole per dm cube sulfate? Okay, पोटेशियम सल्फेट बनाना है सल्फेट आयन के सोल्यूशन के लिए तो 0.1 मोल पर डीएम क्यू इसने कितना बनाया था 100 सीएम क्यू बनाया था तो इसकी कैलकुलेशन होगी 0.1 इन 1000 सीएम क्यूब हाउ मेनी इन 100 सीएम क्यूब तो 100 अपॉन 1000 इंटू 0.1 इसका आंसर आ जाएगा 0.01 मोल्स चाहिए अच्छा एमआर of potassium sulfate K2SO4 is 174.3 कैलकुलेशन से मिला ये AR दिया हुआ था तो अब हमें निकालना है मास ऑफ K2SO4 मास निकालने के लिए होता है मोल्स इनटू MR which is 0.01 into 174.3 इसका आंसर आ रहा है 1.74 grams
Describe how the student should have accurately prepared this volume of standard solution from a sample of K2 SO4 of mass calculated in C1. Okay, तो इसका solution बनाना है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? Add 1.74 grams of K2SO4 in a 50 cm cube beaker and add some distilled water. Stir and transfer to a 100 cm cube volumetric flask. Wash beaker with some distilled water and transfer washings into the volumetric flask. Make up the volume up to the 250 cm cube mark with distilled water. Stopper and invert several times to achieve uniform dilution. And that is how you prepare a uniformly diluted solution of 100 cm cube of पोटेशियम सल्फेट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो करेक्ट करना है, 250 cm क्यूब लिखा हुआ है, इसको 100 cm क्यूब लिखना है क्योंकि इन्होंने 100 cm क्यूब सोल्यूशन बनाने बोला है, तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 cm क्यूब का होगा, नॉट 250। The student carried out an experiment to precipitate the Fe2O3 salt using 0.1 mole per dm cube K2SO4. Only one drop of K2SO4 was needed for the complete precipitation of 10 cm cube of Fe2O3 salt. Calculate how many moles of sulfate were added. Assume that one drop is 0.05 centimeter cube. अब हमारे पास जो concentration बनी है वो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब बनी है, ठीक है ना? तो 0.1 moles in 1000 cm cube, how many moles in 0.05 centimeter cube? तो ये हो जाएगा 0.05 upon 1000 into 0.1, इसका आंसर आता है 5 into 10 to the power of -6 moles. The student decided to dilute the standard solution of 0.1 mole per dm cube K2SO4 to make 50 cm cube of 0.01 mole per dm cube K2SO4. Calculate the volume of standard solution required to make exactly 50 cm cube of 0.01 mole per dm cube K2SO4. तो इसने बनाना है 50 cm cube of 0.01 और इसको दिया गया है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, तो कितनी वॉल्यूम लेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो है फॉर्मूला यूज कर लेंगे C1V1 इक्वल C2V2। अब बनाना कितना है? 0.01 बनाना है और वॉल्यूम कितनी बनानी है? 50 cm क्यूब। तो C1V1 हो गया, C2 जो है वो है हमारे पास गिवन 0.1 और V2 अननोन है, तो इनटू V2। तो V2 के लिए सॉल्व करेंगे, V2 इक्वल्स 0.01 इंटू 50 अपॉन 0.1 विच इज इक्वल टू 5.00 सेंटीमीटर क्यूब।
The volume of standard solution of K2SO4 is 5 centimeter cube. Name a piece of apparatus that could be used to measure accurately the volume of solution calculated in E1. 5 cm की मेजर करना है. अगर आपके वेरिएबल वॉल्यूम्स हैं जो आपको एक्यूरेटली मेजर करने हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्यूरेट यूज हो सकता है. सो ब्यूरेट. In an alternative method, 50 cm cube of 0.01 mole per dm cube K2SO4 could be prepared by using 0.0872 grams of K2SO4. Explain why the dilution method used by the student to prepare 50 cm cube of 0.01 mole per dm cube K2SO4 is more accurate of the two methods. इसकी वजह यह है कि जो मास आपको ये बता रहे हैं वो बहुत छोटा है और आपके लैब में नॉर्मली जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस वाला विंग बैलेंस होता भी नहीं है. लेकिन ये मास इतना कम है कि अगर ये मास ले भी लिया गया, अगर आपके पास 4 वो डेसिमल प्लेस वाला विंग बैलेंस हुआ भी तो परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? द मास ऑफ K2SO4 यूज्ड is too small and as a result the percentage error in measuring such a small mass would be quite high. The student carried out experiments to investigate how much of a particular salt solution was required to fully precipitate all the Fe2O3 salt in a 1000 centimeter cube sample. The salt solutions used were all of concentration 0.01 mole per dm cube with respect to the ion being investigated. Experiment 1. Identity of salt solution KCl, K2SO4 and K3PO4. Charge on anion -1, -2 and -3. Minimum amount of anion required for complete precipitation of 1000 cm cube of salt per mole is 0.1 10 power minus 1, 3.1 1.02 10 power minus 1, 3.25 10 power minus 4 and 8.56 10 power minus 5. जैसे जैसे anion का चार्ज बढ़ रहा है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ anion रिक्वायर्ड, तो क्वांटिटी ऑफ anion रिक्वायर्ड जो है वो कम होते जा रही है. और एक्सपेरिमेंट 2 के टेबल में KCl, MgCl2 एंड AlCl3 इसमें चार्ज ऑन द कैटायन +1 +2 +3 एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ कैटायन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 cm cube salt per mole is 1.02 into 10 to the power minus 1, 1.10 into 10 to the power minus 1 और 1.15 into 10 to the power minus 1. ऑलमोस्ट द सेम है. यानी कैटायनिक चार्ज बढ़ने से अमाउंट की रिक्वायरमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एनायनिक चार्ज बढ़ने से जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो कम होते जा रही है. ये दोनों टेबल का कंपैरिजन हो गया. डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ changing the charge on the anion from -1 to -2 to -3 on the precipitation of Fe2O3 salt in experiment 1 and identify the independent variable in experiment 2. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो चार्ज ऑफ द कैटायन है. तो चार्ज ऑफ द कैटायन अपनी मर्जी चेंज कर रहे हैं आप. अच्छा, पार्ट 1 पे आ जाते हैं वापस. डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द चार्ज ऑन द एनायन फ्रॉम -1 to -2 to -3. द हायर द नेगेटिव चार्ज द लेसर अमाउंट ऑफ एनायन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, यही लिखते हैं. द हायर the negative charge, the lesser the amount
of anion required for the precipitation of sol. Arsenic sulfide As2S3 is highly toxic and should be removed from drinking water. Fe2O3 salt particles are positively charged. As2S3 salt particles are negatively charged. Based on the student's result, which salt used in either experiment 1 or experiment 2 would be the most effective at removing As2S3 from drinking water, and explain your answer. इस अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिवली चार्ज वाला सॉल्ट यूज होगा, और हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट 2 के टेबल में है और वो है AlCl3. तो द सॉल्ट यूज्ड इज AlCl3. एक्सप्लेनेशन: it has the Al3 positive ion which has the highest possible positive 3 charge, which will greatly attract As2S3 sol particles, and they can be removed from drinking water. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा. सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो Al3 पॉजिटिव आयन पर है आउट ऑफ द थ्री सॉल्ट्स गिवन: पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो एल्यूमिनियम का हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज है, वो सबसे ज्यादा आर्सेनिक सल्फाइड को रिमूव करेगा.